जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट। भाई मैंने समस्त को मो ऑडियो आ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छी ना? जय जगन्नाथ सुशांत भाई, समस्ते मते चैट सेक्शन में आगे जनाओ ऑडियो आ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छी ना? कहा को किसी प्रॉब्लम? दीटा जाक क्लियर ना? ओके देख, आमे पूर्व क्लास रे जो यार्थिंग चैप्टर आमे डिस्कशन करूथिले, यार्थिंग रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जेति की भी थिला ताको आमे डिस्कशन करूथिले। ऑलरेडी यार्थिंग रो आमे 100 टा क्वेश्चन डिस्कशन करि सारि चंदी। ओके, आज आउ नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को आमे डिस्कशन करिबा। केही भी साइलेंट रहिबनी, क्वेश्चन आसु न आसु समस्ते चेष्टा करिवो अटेंड करिया पई। ओके, जदि न आसिला मो तमन को जणैबी आंसर, जदि आसुची ठीक कथा। लास्ट को समस्ते पाखर गोटे नोट टे रखिथा, कहार केतेटा ठीक हैला कहार केतेटा भूल हैला, लास्ट को समस्ते मते जणैबो। ओके, समस्ते जणैबो कहार केतेटा ठीक हैला कहार केतेटा भूल हैला। पाखा पाखी जदि हमें यार्थिंग चैप्टर टा को कंप्लीट कर दोछु 2 रु 3 मार्क कंपलसरी, जे कोनोसी भी एग्जाम दबा 2 रु 3 मार्क हमें पाइबा माने पाइबा। ओके, क्वेश्चन आसुची एठिरो। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना, द ग्राउंड रेजिस्टेंस इज केप्ट सच दैट, आमे ग्राउंड रेजिस्टेंस को केमिति रखिबा दरकार। केही भी साइलेंट रो ना, समस्त चेष्टा कर आंसर दवा पे ना। सर द ग्राउंड रेजिस्टेंस इज केप्ट सच दैट द एर्थिंग रेजिस्टेंस इज मिनिमम। एर्थिंग रेजिस्टेंस ता मिनिमम रहिबो ना मैक्सिमम रहिबो ना सब बेले 0 रहिबा दरकार ना नन ऑफ द एबव? कोटा एक्सीलेंट कोन ना सर, एर्थिंग रेजिस्टेंस ता मिनिमम रहिबा दरकार। जदि एर्थिंग रो रेजिस्टेंस ता मिनिमम रहिला देन हमर करंट ता भलो माने फ्रीली माने ग्राउंड हे जिवो। ऑप्शन ए हबो, ऑप्शन बी और सी कोन कहउछो? कोन पे हमें मिनिमम रखिबा ना, करंट कैन बी इजीली ग्राउंडेड। देखो जदि रेजिस्टेंस ता हमर एर्थ रेजिस्टेंस ता मैक्सिमम थिबो ताले हमर करंट ता ग्राउंड भल से ही परिबो कि? हे परिबोनी। एक्सीलेंट कोन ना सर, एर्थिंग रो रेजिस्टेंस ता मिनिमम रहिबा फल रे हमर कोन हबो ना सर, करंट ता इजीली पाथ पाइबो, फल रे से ग्राउंड बहुत माने जो हमर लीकेज करंट ता ग्राउंड को फ्लो हे जिवो। सेकंड क्वेश्चन, द एर्थ लीकेज रिले ट्रिप व्हेन द न्यूट्रल टू ग्राउंड वोल्टेज लिमिट। द एर्थ लीकेज रिले ट्रिप व्हेन द न्यूट्रल टू ग्राउंड वोल्टेज लिमिट। यार आंसर कोन हबो? एटा डीएमआरसी रे ए क्वेश्चन आस्तिला। ओके, को एग्जाम रे ना डीएमआरसी एग्जाम रे आस्तिला। कोन हबो? एक्सीलेंट कोन ना सर, जदि एर्थ लीकेज रिलेट हमर ट्रिप हे जाउची व्हेन न्यूट्रल टू ग्राउंड वोल्टेज लिमिट, सेटा कोन ना सर, एक्सेड सर्टेन सेट लिमिट। ओके, ताको हम कोन कहिबा? ऑप्शन ए एक्सेड सर्टेन सेट लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्लेट एर्थिंग, जेतबेले हमें प्लेट एर्थिंग करूछु जो द पीट इन द एर्थ शुड नॉट बी लेस देन, से पीट टाको हमें केते रु कमिबा माने कमिबो नाही, शुड नॉट बी लेस देन द पीट केते? जेतबेले हमें प्लेट एर्थिंग करूछु द पीट इन द एर्थ शुड नॉट बी लेस देन 3 मीटर ना 4 मीटर ना 5 मीटर ना 2 मीटर। जेतबेले प्लेट एर्थिंग हमें करूछु से जो प्लेट बा पीट रो जो एर्थ रो पीट ता केते रु कमिबो ना, केते मीटर रु? सेटा 3 मीटर रु कमिबो ना, केते ना सर 3 मीटर रु कमिबो नाही। ओके, यार आंसर मध्ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द साइज ऑफ जीआई एर्थ प्लेट। देखो एटा प्लेट एर्थिंग, प्लेट एर्थिंग रे हमर कहार पचारिची ना, गोटे हम जीआई को व्यवहार करूछु आ गोटे कपर को व्यवहार करूछु, से हमको जीआई रो पचारिची। ताले जीआई रो प्लेट एर्थिंग केते हम पढिथिले? एक्सीलेंट सर, 60 सीएम इंटू 60 सीएम इंटू 6.35 होउची हमर कोन ना सर जीआई। केतेटा जागे रे 6.35 कहूची, केतेटा जागे रे 6.30 बोली मध्ये कहूची। ओके, ऑप्शन देखि तमे अटेंड करिवो। तो यार आंसर कौन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जदि हमको कपर कहि थांता ताले हम केते मारि थांते? जदि कपर कहि थांता ताले हम केते मारि थांते
सर 3.15 60 into 60 into 3.15 सेमिति नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन्ड सच दैट डैश ग्राउंड रो रेजिस्टेंस आमे जो डिजाइन करछु केमिति ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन्ड सच दैट तार रेजिस्टेंस जिते पॉसिबल आमे लो रखिबा कोन ना सर रेजिस्टेंस शुड बी लो एज द पॉसिबल ना हाई एज द पॉसिबल एक्सीलेंट कोन ना सर लो एज द जिते पारिबा सेते लो रखिबा को चेष्टा करिवो तबे समस्त मते गोटे केते रहउची तार रेजिस्टेंस ता केते रहउची ऑप्शन ए 0.5 ऑप्शन बी 1 ओम ऑप्शन सी 2 ओम ए तीनटा भितर के कोठा हबो सॉरी एवरीवन ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो ना हमर जो पावर स्टेशन मान करे हमें 0.5 ओम रखुछु ओके सबुठारु बेस्ट अर्थिंग कोटा को हमें कहिबा ना सर जदि 0.5 ओम रु 1 ओम भीतर तार रेजिस्टेंस रहिबो देन सेटा बहुत बढ़िया अर्थिंग प्रोवाइड करिवो नेक्स्ट डैश इज नेसेसरी फॉर अर्थिंग ପାଇଁ को जिनिसटा नेसेसरी ऑफ ए कंडक्टर पार्ट बिफोर मेंटेनेंस व्हाइल टेस्टिंग जेतबेला हमें टेस्टिंग करूछु को जिनिसटा नेसेसरी अर्थिंग ପାଇଁ कोटा ना सर्किट ब्रेकर क्वांटाइजटा ना बसटा ना अर्थिंग स्विचटा ना आइसोलेटरटा ए चारिटा जिनिस भितरु कोटा गोटे नेसेसरी पार्ट बा कंडक्टर रो पार्ट जोटा कि हमर अर्थिंग रे नेसेसरी बोली हम मानु कोटा हो ना अर्थिंग स्विचटा रहइबा निहाती दरकार सुशांत भाई एटा ऑप्शन सी हबो अर्थिंग स्विच ओके ए क्वेश्चन ता हमर आसला यूपीपीसीएल टीजीटी2 रे क्वेश्चन ता आसतिला ओके हमर 2019 जो एग्जाम हेतिला यूपीपीसीएल टीजीटी2 रे ए क्वेश्चन ता आसीतिला नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आईई रूल इफ द अर्थिंग स्ट्रिप इज galvanized steel कोन कहला galvanized steel ले जदि हमें अर्थिंग रो स्ट्रिप ता को तयारी करू मटेरियल द नॉट्स एंड बोल्ट शुड बी देखो अर्थिंग रो स्ट्रिप ता कोडर तयारी हला ना galvanized steel आतर जो नॉट लागुची जो बोल्ट लागुची सेटा को हमें कोडर लगेबा कॉपर रे लगेबा ना एल्युमिनियम लगेबा ना से galvanized steel लगेबा ना पीवीसी लगेबा एटा मध्ये यूपीपीसीएल टीजी2 रे आस्तिला से 2019 रो सेकंड शिफ्ट रे क्वेश्चन ता आस्तिला कोटा हबो एक्सीलेंट हमर जोटा भी रहउची कोन ना सर हमर स्ट्रिप ता जो मटेरियल रहउची सेही मटेरियल तार नॉट बोल्ट रखिले हमर भलो कोन ना सर हमर जो शॉर्ट हमर जो करंट लीकेज करंट ग्राउंड हे परियो पूरा भलो भाबरे कोनोसी प्रकार स्पार्क हबो नै ओके तो यार आंसर कोन ऑप्शन ए जदि कॉपर स्ट्रिप तमे यूज करिथान तो ताले कॉपर नॉट आ बोल्ट हमें व्यवहार करिथानते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए 3 कोर कॉपर कंडक्टर केबल कोन कहिला ना सर 3 कोर विशिष्ट गोटे कॉपर कंडक्टर केबल रे ग्रीन कलर वायर ता काहा को इंडिकेटेड करूची फेज वायर ना न्यूट्रल वायर ना अर्थिंग वायर ना स्पेयर के वायर गोटे 3 कोर कॉपर वायर बा कॉपर कंडक्टर रे हमर ग्रीन कलर वायर ता काहा को इंडिकेटेड करूची काहा को इंडिकेटेड करेला एक्सीलेंट ग्रीन कलर आसिला माने सर अर्थिंग वायर बोली कहि परिबो ओके गोटे कॉम्बिनेशन थिला कार ना ग्रीन आउ येलो रो कॉम्बिनेशन सेटा भी मध्ये हमर काहा पय यूज करले ग्राउंड ता अर्थिंग पय हमें व्यवहार करूतिले गतकाली जोटा हम पढितिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट ऑफ डेली यूज डज नॉट रिक्वायर अर्थ कनेक्शन कोन कहिला क्वेश्चन ता आगे देखो ना सर ए जो चारिटा स्टेटमेंट देछि ए भितरु को इक्विपमेंट को हमें डेली यूज करू ना डज नॉट रिक्वायर्ड हमर अर्थ कनेक्शन जो अर्थ कनेक्शन रो डेली यूज रे हमर दरकार हो नाही बॉडी ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर ना फैन रेगुलेटर विथ प्लास्टिक बॉडी ना गीजर दरकार हो नाही ना रेफ्रिजरेटर दरकार हो नाही कोटारे हमर अर्थिंग कनेक्शन ता दरकार हो नाही कोटा
एक्सीलेंट सर फैन रेगुलेटर ओई जो प्लास्टिक बॉडी अच्छी सेठी हमें लगौना कहा को एर्थिंग को हमें लगौना बट ये वाटर हीटर लगौछु गीजर रे लगौछु रेफ्रिजरेटर रे लगौछु ओके बट हमर जो रेगुलेटर स्विच रे हमें लगौनु जो प्लास्टिक बॉडी टारे नेक्स्ट द एर्थिंग इक्विपमेंट आर यूज्ड टू अवॉइड हमें जो एर्थिंग टा प्रोवाइड करूछु कहा को अवॉइड करिया पे लीकेज करेंट ना ब्रेकडाउन करेंट ना लाइटिंग स्टॉकेट ना ऑपरेशनल सर्ज वोल्टेज कहा को अवॉइड करिवा पई हमें एर्थिंग इक्विपमेंट को व्यवहार करूछु एक्सीलेंट सुशांत भाई कहले सर ऑप्शन सी कोन ना लीकेज करंट रु प्रिवेंट करबा अवॉइड करबा पई हमें एर्थिंग ता को मोस्टली व्यवहार करूछु ए जो 10 टा क्वेश्चन हमने डिस्कशन कले समस्त क्लियर ना कार किछि प्रॉब्लम अछि समस्त क्लियर तो 10 टा क्वेश्चन जदि क्लियर चार सेक्शन यस बोली जणो ओके नेक्स्ट एबे जीबा आउ 10 टा क्वेश्चन कौन कहला ना सर अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल देखो आईई रूल हिसाब रे जो 1956 रे हमको दिया जाइथिला आईई रूल्स द सप्लाइड शुड प्रोवाइड एंड मेंटेन डैश एट हिज परमिशन ना सर परमिशन फॉर यूज बाय द कंज्यूमर को जिनसटा हमको प्रोवाइड कराई छी ना सप्लाई शुड बी प्रोवाइड एंड मेंटेनेंस अर्थ टर्मिनल ना लाइव वायर ना वेब टर्मिनल ना कॉपर वायर कहा को हमें परमिशन दोउची हमें यूज करिया पे बा कंज्यूमर यूज करिया पे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ना सर अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 द सप्लाई शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्स कौन कहला एंड मेंटेन्स कौन करिवो ना सर द अर्थ टर्मिनल एट इज परमिशन फॉर यूज बाय द कंज्यूमर यूज करिवा पई से हमको परमिशन प्रोवाइड करिछि कोट ना अर्थ टर्मिनल को हम यूज करिया पई केबे ना आईई रूल हिसाब रे 1956 नेक्स्ट द कंडक्टर वायर कनेक्टिंग द न्यूट्रल पॉइंट टू द अर्थ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड डैश कौन कहला द कंडक्टर वायर कनेक्टिंग द न्यूट्रल पॉइंट टू द अर्थ इलेक्ट्रोड ताको हमें कौन बोली कहिबा जो कंडक्टर टा हमर कनेक्टिंग होउची न्यूट्रल पॉइंट रे जो जगह रे ताको हमें कौन पूरा डायरेक्ट डेफिनेशन टा क्वेश्चन पचारिची पाखा पाखी ए जो 112 टा क्वेश्चन हमें करलेनी एटू 2 रु 3 थर ए क्वेश्चन टा रिपीट हेलानी ओके जेमिति कहारो भी भूल न होए ताको अर्थ सप्लाई कहिबा ना अर्थ लोड कहिबा ना अर्थ ऑब्जेक्टिव कहिबा ना अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर बोली कहिबा एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर बोली कहिबा काहा को ना सर जोठी कंडक्टर वायर टा कनेक्ट होउची न्यूट्रल पॉइंट टू द अर्थ इलेक्ट्रोड सहित ताको हम कोन बोली कहिबा ना सर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर बोली देखो कहिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द वायर कनेक्टेड टू द अर्थ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड जो वायर टा में कनेक्टेड करूछु कोठी ना अर्थ इलेक्ट्रोड रे से अर्थ इलेक्ट्रोड रे जो हमर वायर टा यूज होची बा कंडक्टर टा यूज होची ताको हमें कोन बोली कहिबा अर्थ लीड ना अर्थ इलेक्ट्रोड ना अर्थ ऑब्जेक्ट ना अर्थ कंडक्टर ताको हमें कोन कहिबा ना सर ताको हमें अर्थ कंडक्टर ना अर्थ लीड the wire connected to the earth electrode रे जो wire टा कनेक्ट होउची is called earth lead ताको हमें earth lead बोली कहिबा ओके ताले earth conductor सर हमें का कहिबा ना earth conductor टा for earthing the two parts are connected by conductor through which the fault current flow in case कोन फ्लो इन केस फॉल्ट इज कॉल्ड अर्थ कंडक्टर भीतर दे कि कोन ना हमर फॉल्ट करंट ता बाहर को पळौची ताको हमें अर्थ कंडक्टर बोली कहिबा बट अर्थ लीड हमें का कहिबा ना सर जो वायर टा कनेक्टेड हैला अर्थ इलेक्ट्रोड सहित से जो पॉइंट रे ताको हमें अर्थ लीड बोली कहूछो एटा ऑप्शन ए हबो एटा भी मध्य डीएमआरसी रो एग्जाम मेंटेनेंस एग्जाम रे आसीथिला 2018 मसिया रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन the connecting of non current carrying part कौन कहला the connecting of non current carrying part of the supply system in the ground is known as ताको हमें कौन कहबा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ना इलेक्ट्रोड ना मेजरिंग ऑफ इंसुलेशन ना याथी कहा थ्रो रे
जो कनेक्टिंग आम करूचु नॉन करेंट कैरिंग पार्ट गुडा को सप्लाई सिस्टम रे इन द ग्राउंड ग्राउंड होबा पाई ताको हमें कोन बोली कहूचु ना सर ताको हमें एर्थिंग बोली कहूचु। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई ए कॉमन मेथड ऑफ एर्थिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो कॉमन मेथड टा पचाला कहार ना एर्थिंग रो चारिटा ऑप्शन देछि गोटे हला एर्थ रेजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप मेथड एर्थिंग थ्रू द वाटर पाइप ना एर्थ सप्लाई ए चारिटा भितरु कोटा गोटे कॉमन मेथड कहार ना सर एर्थिंग फॉर गिवन ऑप्शन एर्थिंग रो कोटा कॉमन मेथड टा हला एर्थिंग थ्रू ए वाटर पाइप। ओके वाटर पाइप हो एर्थिंग थ्रू ए वाटर पाइप टा होची तार कॉमन मेथड टा। ए जो वाटर पाइप आमे जहा कहूचु ताको आमे आउ अदर नेम रे कोन कहूचु ना सर ताको अदर नेम रे आमे हमर पाइप एर्थिंग बोली मध्य में ताको कहूचु। ओके ना पाइप एर्थिंग होबो। ओके पाइप एर्थिंग होबो ऑप्शन डी नो एर्थ सप्लाई नो एटा को एर्थ थ्रू वाटर पाइप बा पाइप एर्थिंग बोली आमे ताको कहूचु कॉमन मेथड जोटा जोटी आमे इंडिया रे सब जगह रे आमे ताको व्यवहार करि परिबा। खाली टिके वाटर पाइप देकी समस्त को डाउट रे पकेया पई एठी गोटे टर्म टा खाली चेंज कर देइची नले वाटर पाइप मींस से कहिला कोन ना वाटर पाइप जा पाइप एर्थिंग हला ता कॉमनली हमें को एर्थिंग टा को व्यवहार करूछु ना पाइप एर्थिंग को जोटा कि सबठारु भलो एर्थिंग बोली हमें नेइछु। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू मेंटेन मॉइस्चर एंड लो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल अराउंड एर्थ प्लेट। कोन कहिला हमर जो एर्थ प्लेट रो चारि पाखरे बा सॉइल को आमे मॉइस्चर कोन मॉइस्चर जेमिति भलो रहइबो मेंटेन रहइबो लो रेजिस्टेंस पाथ जेमिति प्रोवाइड करिया पई आमे काहा को व्यवहार करूछु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वी यूज को टाइप रो मटेरियल को आमे व्यवहार करिबा फल रे हमर मॉइस्चर ता मेंटेन रहउची जोटा आद्रता मेंटेन रहउची ता सहित रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस पाथ मध्ये प्रोवाइड करूची। एक्सीलेंट सॉल्ट चारकोल आ वाटर ए कॉम्बिनेशन को हमें व्यवहार करूचो। सॉल्ट केते केजी ना सर 10 केजी सॉल्ट 10 केजी चारकोल। ओके ताको हमें कोन लेयर हिसाब दबा। ओके फर्स्ट सॉल्ट देलो जदी तापर चारकोल तापर सॉल्ट तापर चारकोल तापर सॉल्ट तापर चारकोल ए टाइप रो लेयर करिकि दबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट शुड बी फिल्ड अराउंड द एर्थ इलेक्ट्रोड टू बी इंश्योर डैश कोथि पाई देखो सेही क्वेश्चन टा को टिके खाली मॉडिफाई कला कहिला कि सर आमे जो मिक्सचर टा दोचु कहारो ना सर सॉल्ट आउ चारकोल रो कोन पाई आमे फील करूचो एर्थ इलेक्ट्रोड ता चारि पाखरे आमे कोन पाई फील करूचो एर्थिंग इफेक्टिव दबो बोली ना लो एर्थिंग पाई ना करंट बा हाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाई ना करंट इंटरप्रोडक्शन पाई को कारण पाई आमे जो मिक्सचर टा को व्यवहार करूचो। समस्ते क्वेश्चन आंसर दियो। कौन हबो एक्सीलेंट से मिक्सचर को व्यवहार करिवार मेन हला हमर जो एर्थिंग ता इफेक्टिव भाबरे हमको प्रोवाइड करियो इफेक्टिव एर्थिंग हमको प्रोवाइड करियो। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट अटैच टू द एर्थ पॉइंट इज कॉल्ड जो ऑब्जेक्ट ता मोर अटैच हेची एर्थ पॉइंट सहित ताकू मो कोन बोली कहबी डायनामिक परफॉर्मर एर्थ इलेक्ट्रोड ना एर्थ कंटीन्यूटी परफॉर्मर ना एर्थ ऑब्जेक्ट ताकू हमें कोन कहबा ए क्वेश्चन टा कोठे आस्तिला से डीएमआरसी रो ओके से 2018 सेकंड शिफ्ट रे फर्स्ट शिफ्ट रे आस्तिला क्वेश्चन टा मन देखो यार हमर जो एर्थिंग चैप्टर पाखा पाखी 4 रु 5 टा क्वेश्चन आस्ति हमर डीएमआरसी एग्जाम रे आगु तो डीआरडीओ बाहरिवार अछि ओके हम आगरे सामने रे अछि ओएचपीसी अछि ओरिडा एग्जाम भी अछि समस्त लागी पड़ो एथरो ए क्वेश्चन आंसर कोन होबो
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ताको आमे एर्थ ऑब्जेक्ट बोली कहूछु जो ऑब्जेक्ट अटैच होउठी हमर एर्थ पॉइंट सहित ताको आमे कोन बोली कहले ना एर्थ ऑब्जेक्ट बोली ताको आमे कहले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एर्थ रो रेजिस्टेंस को रिड्यूस करिया पई आमे कोन करूछु को टाइप रो मेथड को आमे फॉलो करूछु रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड डेप्थ ना कनेक्टिंग सेवरल अर्थ इलेक्ट्रोड इन सीरीज ना कोन इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट ना डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट कोन करूछु अर्थ रो रेजिस्टेंस को रिड्यूस करिया पई हमें काहा को फॉलो करले एक्सीलेंट सर एरिया को हमें कोन एरिया टा को डिक्रीज कर दो एरिया टा को इंक्रीज करेइबा ओके फल कौन हम ना जदि इंक्रीज द एरिया प्लेट रो एरिया जदि इंक्रीज हैला माने हमर लीकेज करंट भलो भाबरे फ्लो हो जिवो ओके आउ कोन कोन हमें करि पारछु रेजिस्टेंस को ये करिया पई गोटे मिनिट हां आउ कोन कोन करले ना सर आमे मॉइस्चर को मेंटेन करिबा सब बेले देखिबा वाटर लेवल जेमिति ड्राई न हो जा वाटर ताको रेगुलरली हमें कोन चेक करिबा वाटर ठीक ठाक अछि कि नै ओके। Next question, the reason for using earthing metal properly in electrical installation is provided by dash. जो कौन पचारला एमिति को रीजन कारणरू आमे यूज करूछु earthing metal को properly in electrical installation is provided. कौन हम ना सर लो रेजिस्टेंस डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड करिवो फॉर ग्राउंड लीकेज करंट पाई से जो हमर कोन प्रोवाइड करिवो ना लो रेजिस्टेंस पाथ हमको प्रोवाइड करिवो एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ए जो 10 रु 20 टा क्वेश्चन हमें कले जो 10 टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन कले समस्त क्लियर ना 110 रु 120 जाय जदि क्लियर 4 सेक्शन में यस बोली जणा ओके एबे जीवा नेक्स्ट देखिबा आउ 10 टा क्वेश्चन कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द टेम्परेरी आउटपुट कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द टेम्परेरी put on by breaking the earth line are the links to locate the line fault कोठा हबो एक्सीलेंट एटा को अर्थ लाइन लिंक बोली कहिबा अर्थ लाइन लिंक बोली कहिबा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सुशांत भाई ऑप्शन डी नो ऑप्शन ए ए क्वेश्चन ना मध्ये आस्तिला हमर डीएमआरसी रो ओके 2018 रे एग्जाम रे क्वेश्चन आस्तिला। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सेकेंडरी साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज अर्थ डैश द सेकेंडरी साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज अर्थ कौन पाई because earth provide protection to machine and human life ओके कौन पाई हमें ताको अर्थ करले ना सर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमर अछि तार कोन सेकेंडरी साइड को हमें अर्थ करिवार मेन रीजन ता होछि अर्थ प्रोवाइड हमको करूछि कोन ना सर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो ता सहित ह्यूमन लाइफ को मध्य कोन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो मशीन को मध्य प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो सो यार आंसर कोन ऑप्शन सी समस्तंकर करेक्ट आंसर। Next question, which of the following method of an earthing requires cast iron pipe? Cast iron pipe पाई हमर को टाइप रो earthing ता में रिक्वायर्ड करूछु rod earthing ना butt rod and pipe earthing ना सर हमर pipe earthing ना plate earthing which of the following method of earthing required cast iron sorry क्वेश्चन टिके पड़ पड़ेला कोन कास्ट आयरन पाइप हमें को जगह रे व्यवहार करूछु रॉड एर्थिंग रे कास्ट आयरन व्यवहार करूछु ना बोथ रॉड और पाइप एर्थिंग रे कास्ट आयरन को व्यवहार करूछु ना पाइप एर्थिंग रे ना प्लेट एर्थिंग रे को जगह रे हमें कास्ट आयरन को व्यवहार करूछु एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर पाइप एर्थिंग रे हमें माने कास्ट आयरन को व्यवहार करूछु काहे को ना कास्ट आयरन को हमें पाइप एर्थिंग रे व्यवहार करूछु। नेक्स्ट क्वेश्चन
which of the following is most suitable type of earthing for a substation? गोटे सबस्टेशन पाई को टाइप रो earthing टा बहुत suitable for a substation को टाइप रो earthing टा बहुत suitable? समस्ते क्वेश्चन आंसर दियो कोटा ना इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड ना इंक्रीज द फ्लैट एरिया एक्सीलेंट क्वेश्चन टा टिके देखो हला which of the following is most suitable type of earthing for substation? Substation मानकरे हमें को टाइप रो earthing करूछु ना सर मोस्टली हमें पाइप earthing टा सेठी suitable मोस्ट भी कॉमनली हमें यूज करूछु सबस्टेशन पई ओके आउ केतरा earthing अछि ना विभिन्न प्रकार तो earthing हमें जानछु प्लेट earthing अछि पाइप earthing अछि ओके कौन है एटा हम ऑप्शन डी ओके पाइप earthing. Next question, which of the following earthing method are used nowadays? वर्तमान हमें को टाइप रो earthing method टा को व्यवहार करूछु which of the following earthing method are used nowadays? कोटा को हमें व्यवहार करूछु एटी तो प्रॉपर प्लेट earthing नाही ना देखो रेजिस्टेंस पाथ को कोन रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस करिया पय माने जो पाथ ता हमर प्रोवाइड करूची तार रेजिस्टेंस लो करिया पय हमें प्लेट रो earthing याटा बढ़ौतले ओके एटी हमु केवल गोटे earthing मेथड देइची सेटाला पाइप earthing आ तीनटा जाको गोटे गोटे कोन तार देखो इंक्रीजिंग डेप्थ गातर माने जो हमर डेप्थ दा बढ़ेबा एटा गोटे earthing एटा गोटे earthing रो नुहे ऑप्शन इंक्रीज प्लेट एरिया टा बढ़ेबा कोन पय ना सर से रिड्यूस करबा हमर रेजिस्टेंस को आउ कोन कहला हमर इनसेटिंग वाटर भी इनसेटिंग करबा कोथि पय ना सर हमर मॉइस्चर टा मेंटेन रहइबो जानि पालो सुशांत भाई एथरो गोटे earthing देइची सेटाला पाइप earthing एटा गोटे प्रॉपर मेथड जदि प्लेट earthing देइथना एप्रोप्रिएट आंसर प्लेट earthing देइथना बट एठी नाही पाइप earthing टा एमिति गोटे earthing जोटा को तमे प्रत्येक जगह रे व्यवहार करि परिबो ओके माने से कहिची प्लेट earthing टा सुइटेबल फॉर ऑल प्लेसेस टाइप ऑफ प्लेस जेते माने आमे जेति प्रकार प्लेसेस ऑल टाइप ऑफ प्लेसेस रे आमे पाइप earthing टा व्यवहार करि परिबा तार ह्यूमिडिटी प्लेस हो कि हमर जे कोनोसी प्लेस हो हम ताको व्यवहार करि परिबा ए तीनिटा को देखो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी तीनिटा को हमें केमिति माने earthing टा को भलो करि परिबा देइची बट प्रॉपर earthing रो नेम देइनी हला नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following earthing method are used in nowadays वर्तमान हमें को टाइप रो earthing मेथड को व्यवहार करूछु ना एबे हमें मोस्टली हमें पाइप earthing टा को व्यवहार करूछु हमर कोन बजट फ्रेंडली हला पाइप earthing टा ता सहित कोन रहउची ना इजीएस्ट टू इंस्टॉलेशन करबा मध्ये बहुत इजी रहउची ओके आ बहुत बढ़िया मध्ये तार कोन हमर earthing बढ़िया प्रोवाइड मध्ये से करूची हमको तेमिति नेक्स्ट क्वेश्चन As for Indian Electricity Rule 1956, all the mediums voltage equipment must be dash. As for Indian Electricity Rule, okay, 1956, all the medium voltage equipments must be dash. कौन हम देखो बिहार एग्जाम रे क्वेश्चन टा पड़ीथिला ओके बिहार टीजीटी 2 रे 2018 मसे रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा गोटे समस्त क्वेश्चन आंसर दियो कौन हम चारटा ऑप्शन आगे पढ़ो आज फॉर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 ऑल द मीडियम वोल्टेज इक्विपमेंट मोस्ट बी अर्थ जेतिकी भी हमरो इक्विपमेंट अछि बा मीडियम वोल्टेज रो इक्विपमेंट अछि सब तक अर्थ होबा निहाती दरकार बाय एटलीस्ट टू सेपरेटेड एंड डिस्टेंस कनेक्शन विथ अर्थ ओके कौन कहला
एटलिस्ट केते रहिबो ना टू सेपरेटेड एंड डिस्टेंस कनेक्शन विथ एयर ऑप्शन डी अछि यार आंसर ओके देखो एटे सीना हमर कहला मीडियम मीडियम याथिंग पई कहला कि हमर मोस्टली दीटा सेपरेटर दरकार ओके एटलिस्ट टू सेपरेट एंड कोन ना सर डिस्कनेक्ट कनेक्शंस विथ एयर बट जदि एठी हमको लो कहि थांदा जदि हमको लो वोल्टेज पई कहि थांदा तने हम कोन मारि थांते ना सर मोस्ट बी एडेड टू याथिंग बाय ए लिस्ट वन कनेक्शन गोटे कनेक्शन रहिबा एटलिस्ट केते वन कनेक्शन रहिबा दरकार हैला लो पई मीडियम पई एटलिस्ट टू कनेक्शन ओके सेमिति हमर हाई वोल्टेज पई कोन रहिबा दरकार ना एटलिस्ट फोर सेपरेट कनेक्शन रहिबा दरकार तीनटा जिंस कहला ए क्वेश्चन टे तीनटा जिंस हमें जानिले गोटे हैला कोन गोटे हैला लोड पई गोटे हैला मीडियम पई आ गोटे हैला हाई वोल्टेज पई लो पई कहला एटलिस्ट वन कनेक्शन होबा दरकार मीडियम एटा में जानले कोन एटलिस्ट टू सेपरेटेड रहिबा दरकार एटलिस्ट केतेटा ना दीटा रहिबा दरकार ओके सेमिति हाई वोल्टेज पई कते कहला ना एटलिस्ट हमर चारिटा कनेक्शन दरकार ओके सेपरेटर कनेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर परफॉर्मिंग मेगर टेस्ट एंड लो वोल्टेज इक्विपमेंट जोटा 440 वोल्ट द सफिशिएंट वोल्टेज रेटिंग केते जेतबळे आमे परफॉर्मिंग करबा कोटारे ना मेगर टेस्ट रे कोठी ना लो वोल्टेज इक्विपमेंट रे ताल तार मिनिमम बा सफिशिएंट वोल्टेज ता केते रहइबो 2000 वोल्टेज रहइबो ना 1000 वोल्टेज ना 500 वोल्टेज ना 1500 वोल्टेज केते रहइबो एक्सीलेंट केते ना सर 500 वोल्टेज रहइबा दरकार लो वोल्टेज सिस्टम पाई हला 500 आ 1000 रु 1500 हला कहा पाई 1000 रु 1500 वोल्ट होची कहा पाई हमर 1000 रु 1500 भी रहउची 1000 वोल्ट एंड 1500 वोल्ट इज ऑप्शन बोले हम ताको मध्ये नै परिबा जे मीडियम हां मीडियम भाई हमर 1000 रु 1500 रहउची ओके सेमिति नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ता दियो all earthing wire and earth continuity conductor are generally made of which one of the following option कोन कहला जेति कि भी हमर earth रो wire गुडा अछि बा एंड earth रो continuity conductor गुडा अछि जनरली हमें ताको कोटारे तयारी करूछु कोटारे ताको हमें तयारी कले ना सर ताको हमें गाल्वानाइज स्टील ले मोस्टली हमें ताको तयारी करूछु कोटारे ना गाल्वानाइज स्टील ले हमें ताको व्यवहार माने कोन तयारी कले आ यारो साइज केते रहउची ओके जो हमर स्टैंडर्ड वायर गज अछि ए जो अर्थ वायर हो कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर हो तार मोस्टली एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गज रे तार साइज केते रहिबो केते देखो दीटा जिंस पई गोटे कहला गाल्वानाइज हमर जो गाल्वानाइज स्टील दा पडिले ओके गाल्वानाइज स्टील रे तार साइज ता केबे हेले भी हमर 10 एसडब्ल्यूजी रु कमिबो नै ओके बट कॉपर हेतिले 14 रु कम 14 एसडब्ल्यूजी जेमि कमिबो नै लेस देन 14 एसडब्ल्यूजी ओके इट शुड नॉट बी लेस देन 14 एसडब्ल्यूजी और कोन कहला ना 10 एसडब्ल्यूजी ता होची स्टील वायर पे गाल्वानाइज स्टील वायर पे 10 एसडब्ल्यूजी ता नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हां समस्तंगर करेक्ट आंसर अछि जो 14 एसडब्ल्यूजी ता कहउछु सेटा हला कॉपर वायर पे ओके जदि तुमको सेठी गाल्वानाइज्ड वायर पचारिले देन सेठी तुमे 10 एसडब्ल्यूजी मारिबो ओके कारण कॉपर ता हमर पतला तार हेले मध्ये चलिबो बट हमर कोन ना सर हमर जो हमर जीआई मारे गाल्वानाइज्ड स्टील रे टिके मोटा वायर दरकार समस्त क्लियर ना ओके what is the required insulation resistance states voltage for equipment operating at a maximum voltage of a 600 voltage what is the required insulation resistance test ए insulation resistance test हमें का द्वारा करूछु ना मेगर साहाଯ୍य रे करूछु हमको देइछि 600 वोल्टेज रे हमें करबा ताले हमको दरकार केते 500 वोल्टेज ना 1000 वोल्टेज रे हमें करि परिबा ना 300 वोल्टेज रे ना 100 वोल्टेज रे कोन हबो
एटा मीडियम कहि देखो क्वेश्चन टा आगे भलरे पढ़ो व्हाट इज द रिक्वायर्ड ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बा मेगर टेस्ट रे वोल्टेज फॉर इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम वोल्टेज देछि 600 जदि कम रे तमे ताको ऑपरेट करियो से सफिशिएंट हबो कि सफिशिएंट हबोनी सेटा सिना 460 थिला बोली आमे 500 नै गले 500 रे 460 से ताको ऑपरेट करि दबो एठी कोन हबो ना सर एटा 1000 हबो ओके 1000 वोल्ट दरकार नि हाते हमर मेगर टेस्ट excellent next question what is the minimum insulation resistance value for a system operating at a minimum voltage for 250 देखो 250 वोल्ट देला तार मिनिमम केते हमें दरकार हमर what is the minimum insulation resistance value for a system operating at a maximum voltage for 250 वोल्ट 250 वोल्ट केमनी होबो हमर एलपी रे ए एग्जाम ता आसीथिला ओके टेक्नीशियन मानकर 2019 रे क्वेश्चन ता 25 मेगा ओम ना 1000 मेगा ओम ना 1000 गीगा ओम ना सर 1000 मेगा ओम ए 100 मेगा ओम देखो मु तुमको एटी चारिटा जिनिस कहि दोची क्लियर हे जाओ एटार गोटे क्वेश्चन बारंबार पचारुची ओके फर्स्ट कथा हला वोल्टेज रेटिंग तापर हमें जानिबा मेगर साइज केते रहिबो तापर जानिबा कोन तार मिनिमम आईआर वैल्यू केते रहउची मिनिमम आईआर वैल्यूटा केते रहउची ए तीनटा जिनिस आगे टिके भलले देखिनो हला फर्स्ट कहला वोल्टेज रेटिंग जदी मोर मैक्सिमम ए जो वोल्टेज टा रेटिंग देछि 250 वोल्ट ओके मैक्सिमम वोल्टेज दला जदी 250 वोल्ट देन सेम हमरो जो मेगर साइज केते वोल्ट रो हबा दरकार ना मेगर साइज टा हमरो 500 वोल्ट हबा दरकार मेगर साइज टा बट तार जो मिनिमम आईआर वैल्यू टा केते हबो ना 25 मेगा ओम रहइबो तार मिनिमम आईआर वैल्यू ओके सेमिति जदी भेल कोन हमरो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग टा जदी देला सेकेंड रे हमरो केते ना सर 600 वोल्ट देला 600 वोल्ट देला ताल मेगर साइज हमें केते नबा ना सर मेगर साइज टा हमें नबा 1000 वोल्ट रो ओके तार मिनिमम आईआर वैल्यू केते रहिबो ना सर मिनिमम आईआर वैल्यू टा रहिबो 100 मेगा ओम रहिबो तार मिनिमम आईआर वैल्यू टा ओके सेमिति 3 नंबर रे कोन कहिला ना सर 3 नंबर रे मते कहिला मु जदी 5 केवी रो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज नेबी 5 केवी रो देन सेठी हमें जो टेस्टिंग टा करिबा मेगर साइज टा मोर केते रहिबा दरकार ना मेगर साइज टा मोर 2500 वोल्ट रो मेगर साइज मु नेबी केते वोल्ट रो ना 2500 वोल्ट रो मेगर साइज नेबी आ तार मिनिमम आईआर वैल्यू रहिबो केते ना सर 1000 मेगा ओम रहिबो तार मिनिमम आईआर वैल्यू सेमिति जदी हमें 25 केवी रो कहिला जदी 25 केवी रहिला मैक्सिमम वोल्टेज ता तार मेगर साइज टा हमें केते नबा ना सर मेगर साइज टा हमें नबा 5000 वोल्ट रो मेगर साइज नबा जानि पारलो ताले 5000 मेगर वोल्टेज साइज जो अछि मेगर साइज टा जदी 5000 वोल्टेज हेइ गला ताल सर तार आईआर वैल्यू केते रहिबो ना सर आईआर वैल्यू टा पाखा पाखी मोर 20 के बा 20000 हमें जाहा को कहूछु 20000 मेगा ओम पर्यंत रहिबो तार मेगर वैल्यू तबे मते एई क्वेश्चन आंसर दो व्हाट इज द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस बा आईआर वैल्यू ऑफ कहार कहिछि ना सर 250 वोल्टेज ए जो आईआर वैल्यू माने कोन ना इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू टा पचरिछि कहार 250 वोल्ट रो ताले केते हबो ना सर 25 मेगा ओम हबो यार आंसर ऑप्शन बी हबो नै एई चारिटा स्टेटमेंट रु गोटे क्वेश्चन आसुची जदी तुमको पचारि थांता 600 वोल्ट रो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग रहिला 600 वोल्ट आ तार इंसुलेशन रेजिस्टेंस रे केते हबो देन तमे माने मारि थांतो कोन ना सर 100 मेगा ओम हबो एई चारिटा पॉइंट क्लियर हेलो ना जदी चारिटा पॉइंट क्लियर हेलो देबे गोटे मिनिट टिके
सेटा मैक्सिमम रहबो गुरुत्व सेटा मैक्सिमम जो 25 केवीटा बहुत बड़ रहउची ना तार साइज मध्ये लार्ज मेगर साइज मध्ये बड़ होई जिवो माने जो लार्ज मेगर साइज 500 वोल्ट तार वोल्टेज आमे अधिक नवा 5000 वोल्ट रो ता सहित कोन कहले ताको तमे मैक्सिमम मेगा रो गीगा भीतर ही जिवो ओके ये जो 10टा क्वेश्चन समस्त क्लियर ना ये 4टा स्टेटमेंट को समस्त टिके नोट आउट करनियो ओके एटार गोटे क्वेश्चन आसुची एटा नोट आउट करनेलो समस्ते जदि नोट आउट करलो मते कोम एटा क्लियर करिवे ओके ए 10टा क्वेश्चन समस्ते क्लियर ना कहार किछि प्रॉब्लम अछि जदि क्लियर चैट सेक्शन में यस जणो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन एबे डिस्कशन करिबा कोन कहला सर को टाइप रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हमें को टाइप रो मेथड को फॉलो करूछु सॉरी कैन नॉट बी यूज्ड हमें व्यवहार करूना रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ एयर एयर थ्रो रेजिस्टेंस को रिड्यूस करिया पई फास्ट कथा हमें को मेथड सब यूज करले तो तुम माने समस्त जानिछो किंतु से पचारिछि एमिति गोटे स्टेटमेंट अछि जोटा को हमें व्यवहार करू नाहु कोटा को ए क्वेश्चन आंसर समस्त दियो एक्सीलेंट यूज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ अर्थ प्लेट हां एटा को हमें व्यवहार करू ना ओके ऑप्शन डी समस्तंकर करेक्ट आंसर सर को मेथड ताला में व्यवहार करूछु ना सर यूज करिबा कोन ना सर मिक्सचर्स ऑफ चारकोल सॉल्ट चारकोल हमें व्यवहार करिबु चारकोल सॉल्ट रो मिक्सचर व्यवहार करिबा ता सहित आउ कोन करिबा ना सर अर्थिंग प्लेट को डीपली हमें अर्थ रे माने कोन पुट करिबा ता सहित आउ कोन करिबा ना लार्ज साइज रो अर्थ प्लेट हमें व्यवहार करिबा लार्ज साइज रो अर्थ प्लेट व्यवहार ए तीन चारिटा मेथड को हमें फॉलो करूछो आउ कोन करिबा मॉइस्चर को मेंटेन करिबा वाटर मझरे मझरे दबा ओके बट हमें छोटो साइज रो अर्थ प्लेट व्यवहार करूना नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप अर्थिंग रेजिस्टेंस कैन बी रेगुलेटेड बाय कहा द्वारा हमें पाइप अर्थिंग रो रेजिस्टेंस को रेगुलेटेड करि परिबा पाइप अर्थिंग रेजिस्टेंस कैन बी रेगुलेटेड बाय डैश एक्सीलेंट कोन हबो ना सर एडिंग सॉल्ट एंड वाटर ओके ऑप्शन ए समस्तंकर करेक्ट आंसर एडिंग सॉल्ट एंड वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर पाइप अर्थिंग पई हमें को टाइप रो इलेक्ट्रोड व्यवहार करूछु प्लेट ऑफ कॉपर रो ना जीआई रो ना सॉलिड रॉड कॉपर रो ना हेलो जीआई रो हमर पाइप अर्थिंग पई हमें को टाइप रो इलेक्ट्रोड को व्यवहार करूछु कौन हम ना सर हॉलो जीआई रॉड को हमें व्यवहार करूछु ओके हॉलो जीआई रॉड को हमें व्यवहार करूछु ए साइज सब बेले पचारि दउची टिके मन रखिबो ओके साइज भी बेले बेले पचारि दउची कोन कहिला ना सर कॉपर रॉड रो साइड जो कोन कॉपर रॉड रो सॉलिड रो तार साइज ता केते रहउची जीआई रॉड रो सॉलिड रो साइज केते रहउची आ हॉलो जीआई रॉड रो साइज रो तार येटा साइज ता केते रहउची ओके जदि जीआई सिंपल जीआई पचारला तार साइज ता रहइबो केते 19 एमएम ओके जदि कॉपर पचारिला 12 एमएम रो तार साइज रहइबो जदि हॉलो जीआई पचारिला ना हॉलो जीआई ता सर हमर 25 एमएम रहउची तार साइज ता ओके ए क्वेश्चन ता बारंबार पचारुची नेक्स्ट among the following which meter is regarded as insulation tester इंसुलेशन टेस्टर भाव में हमें कहा को व्यवहार करूँ इन्सुलेटर को फ्रीक्वेंसी मीटर को वाट मीटर को ना मेगर को एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर हमें मेगर को व्यवहार कले एल प्रे क्वेश्चन ता आसीला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी मेड सच दैट इट इज डैश द ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी मेड सच दैट
it is dash as low possible as high as possible ना 100 ओम रो ना 200 ओम रो ग्राउंड रो रेजिस्टेंस को हमें केते रखिबा दरकार ना सर जेते पॉसिबल सेते लो रखिबा निहाती दरकार आज पॉसिबल आज माने जेते हबो सेते लो रखिबा टाइप ऑफ एक्टिंग सुइटेबल फॉर कोन ना सर सैंड एरिया को टाइप रो यार्थिंग को आमे सैंड एरिया रे व्यवहार करू माने बालिया जगह रे व्यवहार करू बालिया जगह रे आमे काहा को व्यवहार करले भलसे देखी क्वेश्चन आंसर दियो एटा मु थ्योरी पढैला बेले यार्थिंग चैप्टर मध्ये कहिदिली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यार्थिंग यूज करूछु ना रॉड यार्थिंग यूज करूछु गोटे हला रॉकी सॉइल ले हमें कहा को व्यवहार करूछु आ गोटे पचारुछि सैंड एरिया रे हमें कहा को व्यवहार करूछु एक्सीलेंट रॉड टा को हमें व्यवहार करूछु सैंड पाई आ रॉकी सॉइल ले हमें को टाइप रो यार्थिंग करूछु ना सर पथुरिया अंचल में स्ट्रीट यार्थिंग व्यवहार करूछु मन रो अछि तो ओके समस्त भूली गलनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन what is the purpose of lighting arrestor connected between the line and earth in the power system जो पावर सिस्टम रे हमर कनेक्ट करूची जो लाइटिंग अरिस्टर ता कहा का मध्य रे ना लाइन और अर्थ मध्य रे से लाइटिंग अरिस्टर को हमें कोन बोली कहबा तार पर्पस कोन सॉरी तार काम कोन जो लाइटिंग अरिस्टर ता को हमें व्यवहार करूचु लाइन और अर्थ भितरे पावर सिस्टम रे तार काम कोन कौन हम एक्सलेंट तार टर्मिनल इक्विपमेंट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ट्रैवलिंग शॉर्ट ऑप्शन बी हम कौन कहला ना सर टर्मिनल इक्विपमेंट इज प्रोटेक्टेड करूची अगेंस्ट ट्रैवलिंग शॉर्ट्स को ए क्वेश्चन ता मध्ये हमर आस्तिला को एग्जाम रे एलपी रो टेक्नीशियन रे क्वेश्चन ता आस्तिला 2019 रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन will provided grounding of any equipment कौन कहला जो हमें प्रोवाइडेड करूछु ग्राउंडिंग को ऑफ एनी इक्विपमेंट कौन पाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाथ पॉसिबल ऑफ अर्थिंग ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन सीक्वेंस करंट पाथ ओनली ना पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रे करंट पाथ दोची ना मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ पॉसिबल फॉर अर्थिंग कौन हम एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हम यार राइट आंसर ओके जेते रहइबो मिनिमम ही रखिबे त ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेटालिक केसिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल apparatus इज ऑलवेज बी एर्थ टू इंश्योर जो कहला मेटालिक केसिंग्स को हमें जो इलेक्ट्रिकल apparatus रे सब बेले एर्थ करूछु कहा को इंश्योर करिया पाई ऑपरेटर को सेफ्टी को इंश्योर करिया पाई ना इक्विपमेंट को सेफ्टी करिया पाई ना इंस्टॉलेशन को सेफ्टी करिया पाई ना नन ऑफ दिस एबव कोटा हबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑपरेटर केमिति सब बेले सेफ्टी है कि सेफ्टी रे रहइबो ओके बा ह्यूमन जोटा हम ह्यूमन को प्रोटेक्शन जोटा हम कहूछु नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए प्लेट अर्थिंग द प्लेट यूज्ड इन मेड ऑफ प्लेट अर्थिंग रे जो प्लेट हमें व्यवहार करूछु सेटा कोउटा रे तयारी होची कोउटा रे एक्सीलेंट कोन खाली जीआई रे जो प्लेट अर्थिंग हमें करले सेटा कोउटा रे तयारी होची पुणी गोटे कहूच दीटा जंगर साइज केते केते रहउची जीआई 60 into 60 into हाँ बोथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पाइप अर्थिंग द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ द पाइप इज डैश
गोटे पाइप एर्थिंग रे तार स्टैंडर्ड डायमीटर टा कोन पाइप एर्थिंग पचारि छी एक्सीलेंट केते ना सर 38 mm हबो तार स्टैंडर्ड डायमीटर टा Next question, which of the following method is suitable for reducing the earth resistance of an installation? Which of the following method is suitable for reducing the earth resistance of an installation? None of the given options. Na sir, connecting several electrode in parallel, na connecting several electrode in series, na to reduce area of the plate. earth resistance के reduce करूची एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर बोले देखो कौन हम ना सर कनेक्टिंग सेवेराल इलेक्ट्रोड एटा पढ़ी दिले परा सेवेराल इलेक्ट्रोड हम यूज करूछु इन पैरेलली कनेक्शन करूछु ऑप्शन बी हम एटा ऑप्शन सी नुहे कि ऑप्शन डी नुहे एरिया प्लेट केमिति रिड्यूस करिवो एरियल प्लेट जदि हम इंक्रीज करिवा तेन सिना हबो गुरुत्व भाई रेजिस्टेंस लो हबो सीरीज रे तो हबो नै हमें सीरीज रे तो कनेक्ट करूं त पैरेलल ही हम कनेक्ट करूछु ऑप्शन बी हबो एटा नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुड बी डैश जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हमें दोछु इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस रे सेटा कोन डीसी वोल्टेज सप्लाई दोछु ना लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सप्लाई दोछु ना लो वोल्टेज एसी सप्लाई दोछु ना एनी ऑफ दिस ये तीनटा भीतर सब जो तबे हम व्यवहार करि परिबा एक्सीलेंट डीसी वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस रे हमें को टाइप रो सप्लाई दे परिबा ना डीसी वोल्टेज दे कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करछुं ना सेल एंड बैटरी रे पढि नथिले प्लस और माइनस नेक्स्ट earthing is necessary for the protection of which of the following हमें earthing टा जो दोछु कोटा फाइ necessary for protection of in which of the following safety of the appliance safety of the installation ना human safety पाइ सबुटार appropriate answer कोन हबो ना human safety next question what will be the minimum distance between two earthing electrode दीटा earthing electrode रो minimum distance टा केते रहिबा दरकार ए जो minimum distance टा केते रहिबा 1.5 ना 2 मीटर ना 1 मीटर ना 1.75 मीटर रहिबा दरकार एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर 2 मीटर पाखा पाखी 2 मीटर रहिबा दरकार ओके Next, in conducting surface wiring, the distance between two saddles should not be greater than dash. A question answer कौन होगा? In conduit surface wiring, the distance between two saddles should not be greater than dash. केते 60 सेंटीमीटर रो अधिक होबो नाही The following earthing should be in 3-phase system 3-phase system रे हमें को टाइप रो earthing करूछु बोली पचारला सिंगल earthing डबल earthing ट्रिपल earthing ना नो earthing 3-phase system रे हमें को टाइप रो earthing करूछु एक्सीलेंट को टाइप रो डबल एर्थिंग ना ट्रिपल एर्थिंग ना सर डबल एर्थिंग हमें व्यवहार करूछु ओके ऑप्शन बी डबल एर्थिंग हमें व्यवहार करूछु
नेक्स्ट क्वेश्चन सर पर्पज ऑफ यूजिंग चारकोल एंड सॉल्ट चारकोल आउ सॉल्ट व्यवहार करिवार मेन तार रीजन कोन चारकोल आउ सॉल्ट जो आमे व्यवहार करूछु तार पर्पज कोन कौन ना सर कीप एर्थ इलेक्ट्रोड वेट ताको वेट रखिबो एंड कौन ना सर कंडक्टिंग करिक रखिबो ता सहित इंक्रीज करिवो कांटेक्ट एरिया ऑफ द एर्थिंग पाइप ऑफ द प्लेट विथ द गुड एर्थ विथ द व्यू टू रिड्यूस द एर्थ रेजिस्टेंस ओके ऑप्शन सी कौन बोथ ऑफ दिस ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दीटा जाको हो ओके समस्तंगर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन VIR जो वल्कनाइज्ड इंडियन रबर VIR रो फुल फॉर्म बारंबार पचारुची वल्कनाइज्ड इंडियन रबर वायर द कॉपर कंडक्टर इज ऑलवेज बी टिन्ड इन ऑर्डर टू डैश को टाइप रो भाबरे हम ऑर्डर रे रखु ताकू टिन करी की कौन हम सर प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ द सल्फर्स कंटेंट्स ऑफ द कॉपर कंडक्टर ओके ऑप्शन सी कौन कहला वल्कनाइज इंडियन वायर रे जो कॉपर कंडक्टर ता सब बेले टिन्ड इन ऑर्डर टू का भाई ना सर प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ सल्फर्स कंटेंट्स ऑफ द कॉपर कंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्थ कंडक्टर हेल्प्स टू बी ग्राउंड जो अर्थ कंडक्टर ता हमर हेल्प करूची ग्राउंड पई कहा को ओवर करंट को ना ओवर हीट को ना लीकेज करंट को ना हाई वोल्टेज को कहा को से प्रिवेंट करूची बा ग्राउंड करूची एक्सीलेंट आज रो लास्ट क्वेश्चन कौन रहला यार आंसर ना ऑप्शन ए सर लीकेज करंट को से ग्राउंड कर दबो ओके ए जो 50 टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन करले 100 रु 150 ओके एती जो 50 टा क्वेश्चन को मानकर केतेरा ठीक हैला केतेरा भूल जणा आलोक भाई गुरुदत्त भाई तुम मानकर केते कोन ठीक हैला जणा आउ कोठी कार डाउट रहला मते पचार ताकू नला आउथर डिस्कशन कर दबा बारंबार रिपीट करी जे ताकू टिके देखि नबो समस्ते ओके ओके गुरुदत्त भाई कल 34 अछि भलो अछि भाई किछ खराब नै नेक्स्ट सुशांत भाई तमर केते रहला ओके 32 रोची जय जगन्नाथ नेक्स्ट क्लास रे फोन देखा हुआ आउ 40 रु 45 टा क्वेश्चन अछि ना 50 टा क्वेश्चन ताको हम डिस्कशन करे दबा एर्थिंग ता हमर कंप्लीट हे जिवो ओके सब चैप्टर को गोटे बारे गोटे हम सब कंप्लीट करि नबा कोन कहले गुरुदत्त भाई आउ गोटे क्लास होबो 50 टा क्वेश्चन अछि मैक्सिमम क्वेश्चन हम एर्थिंग रो पढी देलेनी ओके आउ जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो सब रिपीटेड क्वेश्चन आसीबो बट ताको भी हमें देखे दबा कारण कोठु कोन आसी ठीक नै ना सब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके थरे एग्जाम दवा पूर्व सब तक जेमते हमें टच करके जाइथिबा हां एबे या पर सार क्लास नेबे मोर क्लास नाही एबे सार क्लास नेबे मु देखि टाइम हेले क्लास ने मेसेज करबी हां एबे सार जाइजन टिके बाहर का असले नेबे